Hello everyone, welcome to OPSC Study. My name is Siddharth Panda, and in today's Prelims Booster 2024, we will discuss another important topic of the day, that is procedure established by law versus due process of law. Before going to the topic, OPSC Study has launched Geography Optional Foundation Batch, which will be only 5,000 rupees cost. तो आपनकर जो ऑप्शनल आपनकर फाउंडेशन बैच रहउचे सेठी आपनकर कंप्लीट ओपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल रो बहुत यूनिट रो सिलेबस कंप्लीट करा जिवो ता सहित सहित आपनको मैथ क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस मध्य करा जिवो विथ ए टाइम स्पैन ऑफ 7 मंथ्स 7 मास धरि के आपनको अप टू योर मेंस थोरोली आपनको ज्योग्राफी ऑप्शनल टा कवर करा जिवो ता बाद रे आपनको एठरे आपनको जदी आपण लाइव क्लासेस मिस करूचंती देन यू मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ यू विथ your recording classes also you will be provided with. तो आपण बिल्कुल देरी न करिए प्रोग्राम टी ज्वाइन करंतु एवं स्टार्ट करंतु ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपरेशन. तो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, procedure established by law versus due process of law. You must have heard these terms are very much similar. क्या बहुत जन को एटा बहुत सिमिलर लागे, बहुत समानता देखा जाए, हेले एटा बिल्कुल समान नुहो. प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ए दुईटा कोन ना दिस आर टू प्रिंसिपल. ए प्रिंसिपल को जिंस रे यूज होची सेटा हमको जानिबा बहुत जरूरी अछि. द प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर टू लीगल प्रिंसिपल्स that are related to the protection of individual rights. मन रखितंतु इंडिविजुअल राइट्स रो प्रोटेक्शन टाइम रे आमे ए दुई प्रिंसिपल टा अप्लाई करि थाउ. And the application of law in legal proceedings different बाकी law मनकर application रे मध्य एई प्रोसीजर टा अप्लाई करा जायते एई प्रिंसिपल टा. while these principles may seem similar, जदियो बाहरु एटा समान किछि जन को एटा बहुत कंफ्यूजन फील हुए कि व्हाट इज एस्टा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. दे हैव डिस्टिंक्ट इंप्लिकेशन. दुई जनकर एप्लीकेशन जो अछि, इंप्लिकेशन जो अछि सेटा अलग अलग अछि एंड आर यूज्ड इन डिफरेंट लीगल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड. मन रखिथांतु एई दुईटा प्रिंसिपल डिफरेंट लीगल सिस्टम रे डिफरेंट कंट्रीज रे डिफरेंट सिचुएशन रे यूज करा जायथाय. तो हम जदी देखिबा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जोटा अछि एटा कोर्ट रो आछि, एटा आछि मन रखिथांतु वी बोरोड दिस फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन. जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा हमें बोरो करिछि. तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करिछि हमें मन रखिथांतु. तो आर्टिकल तो जो आपनकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अछि तो देखंतु आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सेट रे आपनकर डायरेक्टली ए टर्म मेंशन अछि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. એટલે ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे डायरेक्टली मेंशन नाही. फर्स्ट डिफरेंस टा एटा आपण जानि थांतो. तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कोन कहूची आर्टिकल 21 व्हिच मींस दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of their life or personal liberty except according to the procedure established by law. ता माने कोन आर्टिकल 21 कहूची this implies that if the government follows the prescribed legal procedure, जदी गवर्नमेंट prescribed legal procedure law रे जहां लिखा हिची से प्रोसीजर को फॉलो करूची, then while depriving a person of their life or liberty, जदी फॉर एग्जांपल जदि आपण देखिबे आधार केस देखिबे, आधार केस कोन थिला, जो आधार केस थिला राइट टू प्राइवेसी थिला आधार केस रे. जदि से केस रे गवर्नमेंट कहबो कि ना आमे एई केस रे आधार टा कंपलसरी करूछु एंड लॉ को फॉलो करी कि आमे कंपलसरी करूछु, तो सेटा कह जिवो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. से केस रे इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होबो. से केस रे एटा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होबो irrespective of whether the procedure is fair, just or reasonable. Whether the procedure is fair, just or reasonable. एक गोटे एग्जांपल दोछि. 1950 रे कोन हेतला एके गोपालन तमिलनाडु रो गोटे स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर थिले. ना एके गोपालन को कोन करा हेतला ना अरेस्ट कर दिया हेतला. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अंडर रे तांको अरेस्ट कर दियाला. ना एके गोपालन कोन कले सुप्रीम कोर्ट रे केस कले, कहले कि ए जो मते अरेस्ट कराइछि बिफोर इलेक्शन अरेस्ट कराइछि, एटा कोन पे अरेस्ट कराइछि मते ना जेहेतु मु गोटे स्ट्रांग लीडर अछि, जदि मु इलेक्शन लढिबी मु जीति जीबी से जिंस को भय करी कि गवर्नमेंट मते अरेस्ट करिछि. एटा थिला सुप्रीम कोर्ट रे एके गोपालन रो आर्गुमेंट. ना सुप्रीम कोर्ट कोन कहले केस रे कि आपन को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अंडर रे अरेस्ट कराइछि द प्रोसीजर द गवर्नमेंट हैज फॉलोड ऑल द प्रोसीजर्स, प्रोसीजर को फॉलो करी कि आपन को अरेस्ट करिछि, हेंस
the arrest is constitutionally valid अच्छी आपनकर arrest टा valid अच्छी. So ए केस रे we will not see आमे देखिबु नाही कि whether को मनसा को तांकर मनस्थिति नै कि से माने आपन को कोन करचंती अरेस्ट करचंती whether सेटा आपन को पॉलिटिकली पछको नवा पई हला कि को जिंस पई से माने अरेस्ट करचंती सेही जिंस आपरे आमे फोकस करिवु नाही. We are only seeing the procedure follow हिची yes then that is constitutionally valid and this is your procedure established by law. कि जदि आपन कहा को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट रे कहा को जदि आपन जदि डिप्राइव करिया को चाहउचंती राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रु जन को डिप्राइव करिया को चाहउचंती एंड से केस रे गवर्नमेंट जदि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करी की करूची देन सेटा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हबो एंड दिस इज व्हाट स्टेट्स द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देन दिस इज कॉल्ड योर माने ए प्रिंसिपल ला एटा ही कहूची. यदि केस 1 देखंतु एठी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. Procedure established by law is a principle that is primarily associated with the legal system based on common law, including India. In countries following this principle, the government enacts law and individual must comply with those laws. See, procedure established by law कौन कहूची कि गवर्नमेंट कौन करिवो लॉ बनेइबो. once गवर्नमेंट लॉ बनेइला से लॉ मस्ट लोक कौन करिवे से लॉ को मस्ट फॉलो करिवा दरकार. जदि लोक से लॉ को फॉलो न करिवे सेही केस रे कौन हबो आपनकर ना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हिसाब रे गवर्नमेंट आपन को अरेस्ट करि परिबो आपन को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रु बाहर करि परिबो. द गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू सेट द प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग दिस लॉज. अंडर दिस प्रिंसिपल एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट फॉलोज द प्रोसीजर्स it has established, its actions are considered valid even if they may appear unfair and unjust to the individuals. For example दउची कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट गोटे लॉ बाहर कला कि आज समस्त निज निजर किए दाढ़ी निश रखिबे नाही. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एन एग्जांपल हियर कि किए दाढ़ी निश रखिबे नाही. तो प्रॉपर लॉ बना हिची सेति पई आ गवर्नमेंट लॉ फॉलो कला जदी किए दाढ़ी निश रखिची गवर्नमेंट ताको अरेस्ट कला जदी से सुप्रीम कोर्ट जाउची से केस रे कोन हबो सुप्रीम कोर्ट कहिबो कि ओके गवर्नमेंट तुमको अरेस्ट करिछि कोन पई बिकॉज़ यू हैव वायलेटेड दिस लॉ और लॉ वायलेशन रे कोन कहूछि जो लॉ वायलेशन जो गवर्नमेंट तुमको अरेस्ट करिछि फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स मेंशन इन द लॉ कि लॉ अछि तो लॉ रे पेनल्टी मध्ये मेंशन थिबो से सब जिंस प्रोसीजर फॉलो करिछि गवर्नमेंट तुमको अरेस्ट करिछि हेंस द जो आपनकर अरेस्ट होछि सेटा वैलिड होछि. दिस इज व्हाट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहूछि जिंस कि प्रोसीजर जदी फॉलो हिछि देन सब जिंस ठीक. It means that the law is duly enacted by the legislature or the concerned body is valid if the followed the correct procedure. Following this doctrine means that a person can be deprived of his life or personal liberty according to the procedure established by law. This is true. आपन कहा को कहउचनी दाढ़ी काटी दे जदी फॉर एग्जांपल गोटे लॉ कहउची तो दिस इज योर अगेंस्ट योर राइट टू लाइफ. तो राइट टू लाइफ अगेंस्ट एटा जाउची. हाउएवर जेहेतु लॉ रो प्रोसीजर ता फॉलो करा हिची yes you can be deprived of your life personal liberty and life मन रखितांतो. So if the parliament passes a law then the life or personal liberty of a person can be taken off according to the provision and procedure of the law. Simple जिंस आ गया कि लॉ हिसाब रे जदी गवर्नमेंट काम करूची then all the actions of the government are valid, that is procedure established by law. तो क्वेश्चन आछे this doctrine has major flaw अछि कोन फ्लॉ अछि ए डॉक्ट्रिन रे ना किछिटा फ्लॉ अछि. इट डज नॉट सीक वेदर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट आर फेयर जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी. कोन एटा देखुची कि जो बना हला कि दाढ़ी समस्त काटी देबे एटा कोन ठीक. अच्छा जो मुस्लिम्स अछंती सेमन तो काटी परिबने सेमन तो सुन्नत फॉलो करूचंती तो कोन एटा फेयर अछि ए लॉ टा कोन फेयर एटा कोन जस्ट एंड आर्बिट्ररी ए जिंस कोन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ई प्रिंसिपल टा देखु नाही. एटा वन ऑफ द बैक जो सेटबैक ऑफ योर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. Then procedure established by the law means a law duly enacted is valid even if it is contrary to the principle of justice and equity. The strict following of the procedure established by law may raise the risk of compromise to the life and personal liberty of the individuals due to the unjust law made by the law making authorities. It is to avoid this situation Supreme Court stressed the importance of the due process of law. अपन जो फ्लॉ टा देखिले कि
जो लॉ बना होची से लॉ टा फेयर अछि कि नहीं, एटा आपनकर राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायोलेट करूची कि नहीं, वायोलेट करूची कि नहीं, ए सब जिंस को देखिला परे जो माने कोन ए जिंस को कोन आपनकर प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ देखु नहीं, तो ए जिंस रे कोन होची आपनकर राइट टा हेम्पर होची, इक्विटी रहुनी। तो यही सब जिन देखिकी सुप्रीम कोर्ट फर्दर धीरे धीरे कौन है सुप्रीम कोर्ट गोटे जिनस स्ट्रेस देले कि जल्दी कि एक गोपालन केस रे कौन प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ ऊपर बाय लॉ ऊपर से फोकस करथिले। हाउएवर लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे यही जिनस स्ट्रेस देले कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा आपनकर हेबा दरकार, कौन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऊपर ज्यादा फोकस करबा दरकार। तो व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन आछि व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सिंपल जिनस जो प्रिंसिपल टा प्रोसीजर को देखिएगा सांगरे सांगरे फेयर जदि से लॉ टा फेयर अछि कि नहीं, जस्ट अछि कि नहीं एंड आर्बिट्रारी कि नुह, एही सब जिंस ऊपर ध्यान देइथे ताकू कहा जायता ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो देखंतु ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोन, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन नॉट ओनली सीक चेक्स इफ देयर इज अ लॉ to deprive the life and personal liberty of person, but also see if the law made is fair, just and not arbitrary. If the Supreme Court finds that the law is not fair, it will declare it null and void. Again से केस देखिबा जदि सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करूची द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अब से जो देखिला कि जो दाढ़ी काटिबार जो लॉ टा बना हिची से लॉ टा कोन ना फेयर नुह, इक्वल नुह, it against the right of personal your life and personal liberty, it against article 14 right to equality against जाउची। तो हेंस से कौन करिवो ए लॉ जोटा गवर्नमेंट बनेई थिवो से लॉ को से नल एंड वॉइड कर देबो बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नाउ under due process it is the legal requirement that the state must respect all the legal rights that are owed to a person, and the laws that state enact must conform to the laws of the land, like fairness, जो लॉ सरकार बनेइबो सेटा फेयरनेस ही थिबा ऊपर थिबा दरकार, फंडामेंटल राइट्स को बेस्ड करी हेबा दरकार, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करूथिबा दरकार। इट आल्सो गिव्स द जुडिशियरी टू एक्सेस द फंडामेंटल फेयरनेस, जस्टिस एंड लिबर्टी ऑफ एनी लेजिस्लेशन। सी बेसिकली आपण जतले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करूचंती, जुडिशियरी इज एनेबल्ड to make a balance between what is the law that has been made and what is actually fair। तो फेयर कौन अच्छी और लॉ कौन अच्छी ता भीतर बैलेंस रखिया पई यू आर अप्लाइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली मन रखता। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज a legal principle commonly found in legal system based on the common law tradition, particularly in countries like the United States। already told you कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोटू आछि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो इंडिया बोरो करथिला। Under this principle, the government must follow the fair and just procedures before depriving an individual of life, liberty, or property. Due process ensure that individuals have the right to be heard, to present evidence, and to treated fairly before any government action is taken against them। ता माने होउची ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा थोरली देखिबो कि जो फ्रंट पार्टी अच्छी से ताकू सुना गला कि नहीं, तार प्लीटा सुना गला कि नहीं, एविडेंस प्रॉपर आसीची कि नहीं, गवर्नमेंट ओनली प्रोसीजर फॉलो करची सेटा ठीक न। जदि फॉर एग्जांपल आपण देखिबे कि लॉ अछि कि आपण 6टा परे महिला को अरेस्ट करि परिबे नहीं, ठीक अछि महिला को अरेस्ट करि परले नहीं हेले आपण सेठी जाई कि महिला सहित किछु पुलिस जाई कि बदतमीजी कला ता घरे, तो एई जिंस को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे देखा जीवो कि ठीक अछि तुम अरेस्ट करलोनी हेले हरास करिचो महिला को, तो दिस इज अगेंस्ट द राइट टू लाइफ। तो एई केस रे पुलिस को मध्य पेनल्टी लगेबो सुप्रीम कोर्ट। तो डिफरेंस इन लेमेन्स टर्म्स रे जो देखिबा तो डिफरेंस कोन आछे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ equal to procedure established by law plus the procedure should be fair, just and not arbitrary। ता माने होची यारो जो स्कोप अछि स्कोप इज वाइडर। मन रखि थांतो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रो जो स्कोप दा अछि सेटा बहुत वाइडर अछि कि देखंतो। देन आमे किछटा केसेस देखि कि देखिबा कि जदि एके गोपालन केस कथा हम कहली, द केस इन्वॉल्व the detention of A.K. Gopalan under the Preventive Detention Act of 1950, the Supreme Court ruled that as long as the legal process was followed, the deprivation of the life and personal liberty did not violate the Indian Constitution। See, it is Supreme Court simply core principle follow kala procedure established by the law। Then कौन हल देखंतु 1967 आसु your Satwan Singh Sahani versus your D Ramanathan।
तो एई केस जोटा आसिला सतवन सिंह साहाने वर्सेस डी रामनाथन से केस रे सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी एग्जामाइंड under article 14 to ensure its validity and fairness. और article 14 कौन कहूचे right to equality खाली आपण प्रोसीजर फॉलो कले हेबनी आपण देखिया को पड़िबो आपण जो प्रोसीजर फॉलो करूचंती लॉ रे सेटा कोन कहार राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करूची कि दैट मस्ट बी एग्जामाइंड दिस डिसीजन मार्क्ड ए शिफ्ट टुवर्ड्स द इवैल्यूएटिंग द प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ लॉ इन रिलेशन टू इंडिविजुअल राइट्स माने कोन एठी आपनकर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रो शिफ्ट होची ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आपनकर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ता शिफ्ट करिया को लागिला जस्ट देखंतु 3 नंबर केस देखिबे तो आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 द सुप्रीम कोर्ट upheld the previous judgments and emphasized that the procedure established by law must be reasonable ता माने कोन प्रोसीजर established by law प्लस reasonable आपण रैशनैलिटी ऊपर देखुचंदी ता माने इक्वल टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही गला आपनकर तो ता माने होची सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ता ऊपर ज्यादा फोकस करिया को स्टार्ट करिथिला देन देखंतु फोर्थ होची मेनका गांधी केस जोटा फेमस केस जोटु आपनकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्चुअली केम इनटू एक्जिस्टेंस इन इंडिया a liberation interpretation is made by the judiciary after 1978 and it has tried to make term procedure established by synonymous with due process when it comes to protecting the individual rights. In Menka Gandhi versus Union of India case, Supreme Court held that the procedure established by law within the meaning of Article 21 must be right and just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive. Otherwise, it would be no procedure at all and requirement of Article 21 would not be satisfied. Thus, the procedure established by law has acquired the same significance in India as due process of law क्लॉज इन अमेरिका सिंपल जिंस मेनका गांधी केस रे सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट एटा थिला कि व्हेनेवर यू आर एग्जामिनिंग एनी लॉ अपन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्रिंसिपल तो अप्लाई करिवे ही बट एट द सेम टाइम यू मस्ट सी कि द लॉ इवन द लॉ इज राइट जस्ट फेयर एंड नॉट आर्बिट्रेरी एई जिंस मध्ये आपन को देखिया को पड़ो जदी जो लॉ टा बना हिची सेटा फेयर नुह राइट टू इक्वालिटी अगेंस्ट राइट टू लाइफ अगेंस्ट जाउची देन से लॉ को हमें कोन करबा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दबा तो मन रखिथांतु क्वेश्चन पचारे कि प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया रे जदियो कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नाही ताहले मध्ये सेटा को केस रे बेसिकली एग्जिस्टेंस रे आसीतला सुप्रीम कोर्ट रो तो मन रखिथांतु दैट इज मेनका गांधी केस सो नेक्स्ट we will move to the question is 2023 रो पीआई को अछि आपनकर यूपीएससी रो in essence what does the due process of law mean see देखो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन 2023 रे आछि the principle of natural justice the procedure established by law due process of law माने सिर्फ procedure established by law नुहो fair application of the law equality before law this is fair application of the law due process of law कौन कहूची procedure established by law plus fair application of the law but एटी जो ऑप्शन टा আছে this is more valid fair application of the law मोर क्वेश्चन एटी आसे नॉर्मली कि इंडिया रे कोन पई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ स्टार्टिंग रो इंप्लीमेंट करा जाय नथिला ओनली आफ्टर मेनका गांधी केस कोन पई आस्तला तो मन रखिथांतु इंडिया रे तबले इंडिपेंडेंस नै थिला आ आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हेतिला से टाइम रे एक्चुअली रे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही अडॉप्ट करबार थिला हाउएवर with the advice of your Supreme Court judge of America रो सुप्रीम कोर्ट जज कहा को एडवाइस देथिले ना बीएन राव किए थिले आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले तांको एडवाइस देथिले से कि जदि आपण एबे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करिवे सुप्रीम कोर्ट रे तो सुप्रीम कोर्ट कोन करिवो निज हिसाब रे से माने कोन करिवे ना आपनकर सब लॉ को से एग्जामिन करिवे स्टार्ट करिवे एंड एज इंडिया इज ए नेशन स्टेज रे अछि लॉ एबे धीरे धीरे इंडिया रे बना हबो लॉ चेंजेस आसीबो तो दिस विल टेक टाइम एई टाइम रे हमें सिंपल जिंस फॉलो करिवा कथा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ धीरे धीरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अना जीवा दरकार बिकॉज़ स्टार्टिंग स्टेज रे जदि आपण ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आनिबे तो सुप्रीम कोर्ट विल स्टार्ट एग्जामिन ईच एंड एवरी केस ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस इक्वालिटी एंड नॉट आर्बिट्रेरी एई जिंस ऊपर तो प्रत्येक केस रे लॉ धीरे धीरे नॉल एंड वॉइड ही जीवो तो सेही जिंस को अवॉइड करिया पई इंडिया स्टार्टिंग रे फॉलो करथिला प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच